A very warm and delightful good afternoon. A very warm and delightful good afternoon to all the special guests, dignitaries, delegates, and students. I am Pranam Chabra from LCIT School of Pharmacy, Bilaspur. Feels privileged to welcome you all in the first virtual lecture series of Inspiring and Igniting Young Minds to Learn 2023. It gives me immense pleasure to extend you all a very warm welcome on the behalf of Indian Pharmacy Graduate Association, Chhattisgarh branch, in association with LCIT School of Pharmacy, Bilaspur, who has clubbed all of us virtual seminar for inspiring and igniting young minds to learn 2023. Indian Pharmacy Graduate Association is always committed to provide a platform to all pharmacy graduates for their upliftment. IIYMC 2023 is always committed to provide is an attempt of IPGA Chhattisgarh branch to provide a skillful journey for the new pharmacy incumbents in order to accustom them with recent developments in the field of pharmacy and to provide an overview of different career opportunities available to pharmacists. In this lecture series, intermittent speakers would be invited from different facets of pharmacy profession, such as industry experts, researcher, regulatory aspects, project writing, patent filling, etc., to enlighten the budding pharmacist with the newer avenues. Now, I request Dr. Mrs. Shruti Rathore ma'am, who is a motivating and talented professor driven to inspire students to pursue academic and personal excellence, consistently strive to create a challenging, engaging learning environment in which students become lifelong learners and scholars. Dr. Mrs. Shruti Rathore ma'am is a renowned professor of pharmaceutics and working as principal LCIT School of Pharmacy, Bilaspur, Chhattisgarh, and has to credit 20 years of teaching experience undergraduate and postgraduate levels. She is meritorious student throughout her academic career. She has been awarded with gold medal during her M.Pharm. She has completed her B.Pharm, M.Pharm, and PhD from Guru Ghasidas Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. She has duly published more than 50 research papers, both in national and international journals of scientific repute. She has guided more than hundreds undergraduate, postgraduate, and PhD scholars. Dr. Rathore ma'am is author of 10 books. She is an active member of Association of Pharmaceutical Teachers of India, Indian Pharmaceutical Association, Indian Pharmaceutical Graduate Association, and Ambika Prasad Research Foundation. She is editor and associate editor of 6 international journals. She is also a reviewer of more than 10 international journals. She has she was also resource person, panelist, chairperson, and keynote speaker of many conferences, seminars, and FGPs. She has participated in many conferences, delivered lectures, and awarded for her meritorious performances. Dr. Rathore ma'am has conferred with great awards like Chhattisgarh Young Scientist Award 2012 by Chhattisgarh Council of Science and Technology, Raipur, Chhattisgarh, for her research work. Outstanding Women Award in Health and Medical Science 2019 by Venus International Women Award by Venus International Foundation for her valuable contribution to health and medical profession. Second Best Poster Award in National Seminar organized by Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, a Central University, Bilaspur, Chhattisgarh, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Good afternoon, everybody. Namaste. I heartily welcome one and all present over here. A warm welcome to the all distinguished guests to this inaugural of lecture series organized by Indian Pharmacy Graduate Association Chhattisgarh branch. We are honored to have with us today Honorable Dr. Atul Kumar Nasa as a chief guest. He is the President and Managing Trustee of Indian Pharmacy Graduate Association. We are honored to have Honorable Dr. Dipen Singh as a guest of honor, Chairman, Education Regulation Committee, Pharmacy Council of India, New Delhi, and President of Indian Pharmacy Graduate, Vice President of Indian Pharmacy Graduate Association, Central Zone, Bilaspur. Respected Dr. Sri Lakshmi Darbamula as a special invitee. She is
Joint Secretary, Indian Pharmacy Graduate Association, South Zone. We are honored to have respected Ms. Bhagyashree Bhargav as a special guest and eminent keynote speaker of today's program. She is Assistant Vice President, Stride Pharma Science Limited, Bangalore. We are honored to have respected Dr. Manju Rawat Singh. She is President, Indian Pharmacy Graduate Association, Chhattisgarh branch. Actually, she is also the organizer of this lecture series. We are honored to have you all today with us. Thank you very much, all of you, for graciously accepting our invitation and consenting to be here, and I request you to grace this event by your presence. I cordially welcome all my faculty members and the other faculties and all the participants, those who have joined us from the far off places of the India. In last but not the least, all my dear students, those who are always a big support for me, it's my great pleasure to welcome you all to this noon. Without taking your much time, once again, I heartily welcome one and all to the first lecture series IIYML 2023 on theme Inspiring and Igniting Young Minds to Learn, organized by Indian Pharmacy Graduate Association Chhattisgarh branch in association with LCIT School of Pharmacy, Bilaspur, Chhattisgarh. So please be stay here for listening the words of the great people. Thank you. Thank you very much. Now it's over to you, Pranam. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Your thoughts providing address excel in pharmaceutical areas and in life. Now, I request Dr. Manju Rawat Singh ma'am, who has obtained her M. Pharma in Pharmaceutical Biotechnology from Department of Pharmaceutical Science, H.S. Gaur University, Sagar in 2004, PhD from University Institute of Pharmacy, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Jaipur in 2009, where she is currently working as assistant professor. She did her postdoctoral research from University of Mississippi, Oxford, USA. She has around 18 years of teaching and research experience. Her prime research area include designing strategies for protein and peptide delivery, tropical system for autoimmune disorder like psoriasis, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, and experimental designing using advanced statistical and mathematical modeling methods. She has 85 research and review papers published in national and international journals. She has citation more than 3,000 with H-index 31 and I-index of 66 and Scopus H-index 33. 4,706 citations. She has two international and two Indian patents. She is among the top 2% list of scientists worldwide in the field of pharmacy and pharmacology, surveyed by Stanford University 2021. She has successfully completed her several projects work funded by Indian Council of Medical Research, University Grant Commission, Chhattisgarh State Council of Science and Technology, and Department of Science and Technology. She is the recipient of DHR ICMR International Fellowship 2014-15 and number of awards at national and state level for her excellence in research. She has bestowed with Best Teacher Award of Pandit Ravi Shankar Shukla University in Science Edition 2016. She is a co-convener APTI Women Forum. She is a lifelong member of various professional bodies and serving as Joint Secretary Indian Pharmaceutical Association Chhattisgarh Branch, Secretary Association of Pharmacy Teacher of India, Chhattisgarh Branch, Indian Pharmacy Graduate Association. She has been visiting scientist at School of Pharmacy, Department of Pharmaceutics, University of Mississippi, Oxford, USA 2015. She is engaged in research projects focused on studying pathophysiology and devising new treatments, mainly for autoimmune disorder and inflammatory diseases, in collaboration with various universities at USA and Australia. To tell us more about this event, ma'am, please. Namaskar.
and warm greetings to the distinguished guest, Honorable President of IPGA, respected Atul Nasa sir, as a teacher for this event, who has always been so supportive and key driving strength in all our endeavors. Honorable Vice President, Central Zone, Dr. Mic Dipen on. Singh, for all Man- the support. Um, Manju am I ma'am, audible? please turn on your mic. It's on. It's on. Okay, ma'am. It's not audible. Is it audible? Am I audible? Yes, ma'am. Now you are audible. Okay. Please continue, ma'am. Namaskar, and I would like to say it again. Warm greetings to the distinguished guest, our Honorable President of IPGA, most respectful Atul Nasa sir, who has always been so supportive and the key driving strength in all the endeavors that we are engaged into. Honorable Vice President, Central Zone, Dr. Dipen Singh sir, for all the support and in the execution of such events. Special invitee and my personal friend, Dr. Sri Lakshmi, Joint Secretary of IPGA South Zone. Special guest and the keynote speaker, Ms. Bhagyashri, for your kind consent and all the participants connected virtually with this event. I'm really personally overwhelmed with your auspicious presence and look forward for your support and blessings. As has been said earlier also that IIYML 2023, it has been a long awaited program in our mind, and this is primarily for inspiring and igniting young minds to learn, where we propose to provide a common platform to all the pharmacy graduates, which is in line with the objectives of IPGA. IPGA's CG branch is a newly formed state branch, and the sequence of events proposed under this series is a joint effort of all our team members, which will be organized every month involving different institutions and different speakers. And furthermore, we wish to accustom the young pharmacy incumbents with the different opportunities which are available in the area of pharmacy. We'll be inviting eminent speakers from different fields of pharmacy, such as industry, education, regulatory, research, foreign education, so that young graduates will be enlightened with the newer avenues to improve their creativity, innovation, and performance. Virtual connectivity has really given us this accessibility to wider population, and we aim to create or seek such an environment of trust and empathy to strengthen the relationships. I would also like to make a personal note over here that if participants wish lectures in a particular area, they can even write to us or contact us in this regard. And I'm sure that these virtual series of lectures will enable us to enjoy the journey of unearthing the immense opportunities which are available in pharmacy with a bright career ahead. Thank you so much once again for your gracious presence. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving your valuable insights of IIYLM 2023. Ma'am, I'm sure your address will help a lot in understanding the motives of this amazing session. Without a further ado, I request our special invitee to motivate us with her golden words, Dr. Sri Lakshmi Darbhamulla ma'am. Dr. Sri Lakshmi Darbhamulla ma'am is having a decade full of academic experience, presently working as professor and vice principal at Vikas Institute of Pharmaceutical Sciences, Rajahmundry, Andhra Pradesh. She got appointed as State Coordinator of Women's Forum for Andhra Pradesh in year 2021 and been serving the fraternity in a unique style and with selective topics to create awareness in the pharmacy profession. She is considered as a continued and innovative learner so as to render the best to her students always. She was awarded with PhD in April 2018 and her master's in pharmacy and pharmaceutical chemistry was done by May 2012 from NITTE, Mangalore, Karnataka. Apart, she has done diploma in business management from ICFAI University. Her Bachelor of Pharmacy 2005 was from JNTUH, Bhapalta College of Pharmacy. She has served in several pharmacy institutions over her tenure as academic and research areas, such as served as assistant professor in Vikas Pharmacy College, Visakhapatnam, as assistant professor at Vikas Institute of Pharmaceutical Sciences, then as associate professor at Aditya Pharmacy College, and thus now working as professor and vice principal at Vikas Institute of Pharmaceutical Science, Rajahmundry, Andhra Pradesh. She is having a well-versed research expertise, including her PhD project, validation of analytical methods of some drugs in bulk and doses form, but not limited, so as guided several students. She had made several project presentations in CSIR, IICT,
and IPC, and many other platforms as well. She has published more than 25 papers in various national and international journals. Moreover, Dr. Sri Lakshmi Darbhagulla ma'am has participated in several conferences, seminars, webinars, and workshops, and also conducted them in multiple. Among them, awareness of rare diseases webinar on IPGA platform is much applauded. She has participated in webinars organized by the Federation of Asian Pharmaceutical Association, Malaysian Pharmaceutical Society, MDHR Innovation Cell by MHDR's Innovation Cell, MT University Uttar Pradesh, Noida, and Maibo Group. She has bagged many achievements award in her career, including Best Library User Award in 2017, acted as speaker for the FDP on drug design and development sponsored by AICTE, organized by Ronald Institute of Pharmaceutical Sciences, Orissa 2021, trained innovative ambassador for IICMHRD, presently convener of IIC in VITS, apart from the leading IPGA Women's Forum for the state of Andhra Pradesh, also having life membership in Association of Pharmacy Teacher of India and Indian Pharmaceutical Association. Ma'am, please. Thank you for the long introduction. Welcome, ma'am. Thank you very much. Uh, on the onset, I would like to first congratulate Dr. Manju Rawat Singh ma'am, who has taken the initiation to do this first virtual lecture series under the Chhattisgarh branch IPGA. Thank you, ma'am. And as well as I would like to thank all the people who have worked for the success of this first virtual lecture series. And this is an initiation by Chhattisgarh branch, which has to be taken inspiration by all the other branches of IPGA, and I request all others to plan this type of programs. And from the Women's Forum of IPGA, I would like to congratulate again all the participants who are participating in this, and as well as I would like to tell all the participants to gain knowledge from the industry people who are coming over there, because there is a more gap between the bridging should be done between the industry and the academy. So this will be useful for many students where you are getting a long lecture series are going to be conducted with the help of the industry people. And I would like to thank today's chief guest, Dr. Atul Nasa sir, who is the pillar of IPGA, the president of IPGA. Sir, thank you very much for supporting us do all these things. And the guest of honor, Dr. Dipendra Singh sir, thank you so much for spending your time over here. And I would like to thank the keynote speaker, Bhagyasri Bhargavi ma'am, who has given her precious time to take in this. And I would like to thank Dr. Shruti Rathore ma'am, Joint Secretary Chhattisgarh branch, who has taken initiation and doing all the things. Thank you so much, ma'am, for your interest and doing all the things. And lastly, I would like to thank each and everyone who has taken the opportunity to make this a grand success. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for motivating us towards a better tomorrow. It's a pleasure to have you here with us today. Today, we have with us a very special person, a guest of honor, Dr. Dipendra Singh sir, who is presently working at University Institute of Pharmacy, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. He is the nominated member of Pharmacy Council of India, New Delhi. He is serving as the chairman of Education Regulation Committee (PCI). He has around 19 years of teaching and research experience. His prime research area includes formulation of multiple bioactive delivery system for wound management, designing strategies for protein and peptide delivery, advanced statistical and mathematical modeling method, tissue culture technique, and designing novel systems for delivery of plant actives and extracts.
He has published more than 107 research and review papers in national and international journals. He has 2 international and 2 Indian patent grants. He is among the top 2% list of scientists worldwide in the field of pharmacy and pharmacology, surveyed by Stanford University worldwide in the field of Pharmacy and Pharmacology in the year 2021 and 2022. He has also a number of prestigious awards at the state level for excellence in research. Young Scientist Award of the State of Chhattisgarh 2006 in Medical Science, State Evaluator and Mentor for National Children Science Congress. He is a life member of various professional bodies like Indian Pharmaceutical Association, Association of Pharmacy Teachers of India, Indian Society of Pharmacognosy, and serving as Vice President of Central Zone APTI IPGA elected. He has been to numerous countries for scientific and research collaboration, such as National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of Mississippi, Mississippi, USA, School of Medical Science, Deakin University, Australia, Ames University, Malaysia, and University Sultan Zainal Abdin, Kuala Terengganu, Malaysia. So, please. Thank you, Karnam. A very warm Welcome, sir. good afternoon to all of you. Indeed, a pleasure to be part of this function, and most respectful chief guest of today's function, Honorable President IPGA, Dr. Atul Kumar Nasa sir, for whom I always say, but to interacting with him, you get the positivity. He is so positive, always responding very positive. When you will approach to him, he will always say, okay, fine, without a second of delay. Okay, go ahead, we'll do it. So thank you, sir, for giving your valuable presence here and always supporting us to do something good for the profession. My colleague and this president of IPGA Chhattisgarh branch, Dr. Manju Singh, who has been a very new branch of IPGA, but very active and very enthusiastic branch. And I have seen, because I am continuously interacting with all the members of IPGA of Chhattisgarh, that how they are planning and they are thinking to work very professionally for the all graduate professionals of pharmacy in the state and directly or indirectly to the whole country. So thank you for organizing this event and inviting me. Very dynamic Dr. Rathore. She's always on toes. When if you give opportunity, she just come and she say, okay, I will be the first to organize. And this time also she is first to organize, and they have planned this lecture series of for igniting. And if you'll see both the words inspiring and igniting, that motivate me. That they have arranged. I have seen what people have planned. So my best wishes for this function and coming all the series of the lecture. Very special Dr. Lakshmi. She is always very active. The only woman member in the executive, and she is joint secretary from the South Zone. She is always on toes for organizing and inviting people for events. So I'm very thankful that you have also joined here. And the most important, the speaker of today's function, Miss Bhagishri Bhargav ji. She is having a vast, I have seen just very fastly, I have seen the profile, and you are having a very dynamic profile. And I'm very hopeful that because of your talk, the people are going to be benefited in this event. So, friends, this is always being a vice president of Central Zone. You people have invited me, and I'm only having a very small message for you all, that being a professional, what we can contribute to the profession and indirectly to the society, we have to do it. Always sharp your axis and be a very smart professional. I'm saying smart professional, not only the professional. And my kids are using a very new word which is always for me. So they use the term pro. So I want a pro pharmacist, a pro or true pharmacist who are working for the society, and definitely who will add laurels to our profession and will work hard for the state and the country. So thank you. My best wishes for your function. Though we are in the mid of some very important issue, so please allow us to we will be remotely, I will be associated with you.
So please allow me to be off with off camera. I'll be joining you. So thank you so much for this invitation. My best wishes for your program. Thank you so much, sir, for motivating and inspiring all of us with your valuable golden words. I promise each one of us will be a pro pharmacist in future. It's a great pleasure for me to introduce our chief guest today, who is a great personality, Dr. Atul Kumar Nasa sir. Dr. Atul Kumar Nasa sir is the president of Indian Pharmacy Graduates Association and managing trustee of IPGA Welfare Trust and executive committee member of Pharmacy Council of India. Dr. Atul Kumar sir is retired deputy drug controller with charge of controlling and licensing authority at the Drug Control Department in the Delhi government. He has been awarded the Best Drug Control Officer Award 2017, instituted by the All India Drug Control Officer Confederation. He has also been accorded the Fellowship of Indian Pharmaceutical Association, considering the hitherto entire professional trajectory in the field of pharmacy and drug regulation. Both the recognition were given to him during the inaugural ceremony of 69th Indian Pharmaceutical Congress held at Chitkara University, Rajpura, Punjab. Currently, A.K. Nasa Sir is the head of office of Drug Control Department with the government at the National Capital Territory, Delhi, an officer with more than 25 years of experience in enforcement of drug law. Dr. Atul Kumar Nasa sir has participated in various national and international conferences on pharmacy and related fields. He has also been a part of the program organized by World Health Organization, CDSCO, and other industry associations on my right topics related to drug regulation. He is a member of Drug Consultative Committee and also a member of National Pharmacy Council. Please bless us with your kind words, sir. Thank you very much, Mr. Tranam, for a nice Welcome, sir. introduction and a very good afternoon to all of you. And at the outset, I welcome my friend Dr. Dipender, Vice President of IPGA Central Zone, Dr. Shri Lakshmi, the Joint Secretary of IPGA South Zone, Dr. Manju Singh Rawat, the President of IPGA Chhattisgarh Branch, Dr. Shruti Rathore, the Principal of LSIT Institute of Pharmacy and Joint Secretary of IPGA Chhattisgarh Branch, and today's Speaker of the Day, Madam Bhagyashri Bhargav, who is the Associate Vice President of Strides Pharma Science Limited, Bangalore, all the dear students, academicians, and participants. My special congratulations to IPGA Chhattisgarh Branch, the President Dr. Manju Singh Rawat, and her team for taking an initiation to start this lecture series for young students that is inspiring and igniting young minds to learn 2023. During my 37 years of my experience from pharmaceutical industry, in academics, in drug control, I think in my introduction it has been told now still I am working with drug control department. Now I have retired from drug control department Delhi, and presently I am working as a pro vice chancellor with SGT University Gurugram. So 37 years of experience in different streams has shown wider scope of pharmacy to all the young pharmacy students. We have seen a time of pandemic. Entire world has seen a time of pandemic. And during that first wave or the second wave of pandemic, my salute to all the pharmacists who worked very hard, particularly in the pharmaceutical industry, in research and development sections, in quality control departments, in quality assurance departments, in hospital pharmacy,
in community pharmacy, in clinical pharmacy, in regulations, in academics, and so on. Everybody joined their hands to fight that pandemic, and today we can say yes, India is the pharmacy of the world. We have seen the time during second wave when there was a big challenge that our country pharmaceutical industry used to import active pharmaceutical ingredients APIs from China, and we were totally dependent upon China. But during that pandemic time, it was a big challenge that there was no supply from China of APIs to our country, and all the pharmaceutical industry, particularly API industry, was facing a big challenge. The message given by our Honorable Prime Minister of India, Atmanirbhar Bharat, self-dependent country, made our API industry very strong. And today, once our API industry is strong, automatically the formulation industry is also very strong. And once API industry or pharmaceutical industry becomes strong, there is a lot of opportunities for pharmacy students to join their career in the relevant field in pharmaceutical industry, in medical devices industry, in diagnostic industry, in cosmetic industry, and so on. And there are ample number of opportunities to start your career. The theme of this, webinar series, which IPGA Chhattisgarh branch has started, recent development in the field of pharmacy, and to provide an overview of different career opportunities is well chosen. Because once we choose pharmacy as a career or pharmacy as a profession, lot of question marks what will be the future. There is no need of any worry. During my 37 years of my experience, I have seen ample opportunities, but there should be some aim what you want to become. You want to join academic as a career, you want to join pharmaceutical industry as a career, you want to go to research and development, you want to go to hospital pharmacy, you want to go to join community pharmacy, you want to join clinical research organizations, you want to join regulations as a drug control officers, you want to join academic as a teacher. Options are always there, but there should be some aim. My message to all the young students attending this webinar, that don't stop your career at bachelor's level. After completion of your Bachelor of Pharmacy course, you must go for higher studies. It can be Master of Pharmaceutical Sciences, it can be MBA, it can be law or any other specialization, or even you can go outside our country for higher studies. We have seen during the pandemic time, when the entire world was looking after, India, towards India, there should be some molecule which can treat the COVID. Though the medicines like remdesivir injections, tocilizumab injections, amphotericin B for black fungus or mucormycosis, they were initial line of treatment for COVID. But remember, these remdesivir injections or tocilizumab injections were not meant for COVID. They are basically used in a rheumatoid arthritis to increase the immunity. But later on, the emergency meeting called by our Honorable Prime Minister of India with the entire pharmaceutical industry, with WHO and with all the state drug control departments, including CDSCO, that there should be some molecule when the entire world is looking towards India to treat this COVID. Thanks to Bharat Biotech and Serum Institute of India, they developed two vaccines, Covishield and Covaxin. And today, entire world is using these vaccines. So this is how our pharmaceutical industry works. So with this message to all young pharmacy students participating and attending this webinar series, let us conclude in a way that pharmacy profession is a best profession. Whatever I may be, whether I work in pharmaceutical industry or in academic or in drug control, back to the vice chancellor in one of the universities, I always says I am a pharmacist. So with these remarks, my all best wishes to the young pharmacist, and I wish them a very bright future ahead. And I wish that this virtual lecture series organized by IPGA Chhattisgarh branch
will be definitely helping all the young pharmacists and the our guest speaker of the day, Madam Bhagyashri Bhargav, Associate Vice President, will be definitely covering all the aspects relating to future of pharmacy profession. So my best wishes to the entire team and special thanks to Dr. Manju Singh Rawat for inviting me to deliver a talk or inaugural address during this webinar. Thank you very much. Uh, 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 Hello, sir, Dipen sir. So my heartfelt thanks to all of you, all the distinguished guests for joining us today. In spite of your busy schedule, you had given your time to us, sir. Dipen sir, Nasa sir, Bhargav ma'am, Lakshmi ma'am, Manju ma'am. So thank you very much for being with us and making our event so successful. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you all. Actually, it is our pleasure. I would like to add some more words. It's our pleasure, my pleasure especially, because when we come out of college, we become very busy in our industry, day-to-day routine. We have a lot of timelines, schedules. In that, when I came here and I'm hearing to all of you, especially what Dr. Atul Nasa sir said or Dipendra Singh said, everyone. So it became, for us, it became inspiring. So even though I'm going to inspire people, but however, I got inspiration to do my PhD. So, we come out and we forget to do all those things, and then we become so busy and we start earning. See, what happens when we get money, then we think it's okay now. I got good job, but when we go to higher positions, really, education field is very good. So that we realize later on. So I'm very happy that you have invited me, and because of that, I am inspired to continue my PhD. So that is one of the very good thing happened today because of all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank Okay. you, sir. Atul sir. Thank you, Dipen sir. Thank you, Lakshmi ma'am. Thank you, Bhagyashri ma'am, for giving your valuable Yeah, time yeah. to us. We know that you are so busy, and in spite of that, you have given us your time. Thank you so much. No, no, Thank you. it's my pleasure. It's my Thank you. pleasure. Thank you. Thank you so much, sir, for your stimulating words. Your words are very helpful and beneficial to all of us. Thank you so much for taking out time from your busy and hectic schedule for us. We are pleased to have your valuable participation and contribution in this outstanding conference. Without a further ado, I request our special guest and keynote speaker to share her valuable life experiences and her knowledge with us, Ms. Bhagyashri Bhargav ma'am. Ms. Bhagyashri Bhargav ma'am is Assistant Vice President, Global Quality Group, Strides Pharma Science Limited. She has pursued Bachelor of Pharmacy in 2000 from MGV's College of Pharmacy, Nasik, Diploma in Current Good Manufacturing Practices in 2007 from Insight Academy, Pune, Postgraduate Diploma in Contact Research and Clinical Trial in 2008 from Bioinformatics Institute of India, Masters in Clinical Research and Regulatory Affairs in 2012 from Sikkim Mahipal University. She is a seasoned professional with over 22 years of experience in pharmaceutical industry. She possesses expertise in quality assurance activity, charge control, change control, validation, documentation, investigation of OOS, internal audits, training, self-inspection, regulatory affairs, annual product review, product quality review, vendor documentation and qualification. She has great experience in handling audits and compliance for all sites where multiple doses forms such as tablets, capsules, ointments, liquid, aerosol nutraceuticals, etc., including international finished goods service provider and AIP sites, and in preparation of schedules for audits by prioritizing using the risk assessment framework. With a great skill, she is monitoring quality for contract manufacturing sites for all Strides Group companies such as Hospira Healthcare Limited, Bright Future Lab Limited, OP Lab Limited, Hong Kong, Cipla Limited, Centec Pharmaceuticals Private Limited, Sandoz Private Limited, Lupin Limited, Amrit Pharmaceutical Limited, Cox Research Center Private Limited.
She has worked for the US, Asia Pacific, China, Hong Kong, Japan, UK, Europe, Costa Rica, Central American countries, Africa, Swiss, etc., and successfully faced audits of FDA, World Health Organization Geneva, Ukraine, Uganda, RNTCP and MSF France, Japan, MHRA, Anvisa, Argentina, Korea, US FDA. She has credentials of being received high performance and high potential talent in Philippines within 6 months. She has been awarded with several different awards for identifying potential hazards related in safety in sand dunes, awarded and confirmed 3 months early for high performance and potential in SIPLA awarded and identified for making a difference in Hospira Vizag quality, high-performance talent. Awarded for individual excellence by Strides leadership team for going beyond the call of duty to ensure compliance through internal audits, extraordinary focus on lab compliance, and many more. Ma'am, please. Uh, thank you, Tranam, for Welcome, my ma'am. introduction. Hope I'm audible. So I just Yes, wanted ma'am, you are to audible yes, perfectly. thank you. First of all, I would like to thank all of you for inviting me, for giving this opportunity. So just I was speaking with Shruti ma'am, and you know what happens is when we complete our pharmacy. So already see Dr. Atul sir has informed you that you know you don't leave at only acquiring like B pharmacy. You please go ahead and pursue your career as much as possible until a PhD or you know wherever you have your own interest. So you go and achieve that first. So this is what we are doing. Like for example, when I completed my pharmacy, that time immediately we got jobs because people will be waiting to take fresher students in industry, and then we get the opportunity and we leave our teaching profession and career college, and then we join industry. But when we as we go ahead, when we step one step when we reach, then we realize that we must have more knowledge, we must achieve more knowledge, we must be having a specialized knowledge on certain things. So then we again go back and you know try to do the studies while working. So whatever degrees I have done at the what you have heard like masters and everything, that I have done while doing my career as a part time. But if I would have completed all the things in first go, it would have been very good. So that is first point today which I would like to tell all the students. So you know have a focus and please try to complete your education first and then go into industries. There are a lot of things open for all of you. So it's not that you will not be, you know, today if I miss an opportunity, I'm having an offer letter, and then later what would happen, whether I would get this offer letter after 2 years. It is not like that. So basically you try to achieve highest degree of your education first and then go into industries. That would be my first suggestion after 23 years of experience in an industry. So it is very good that you know this virtual series has been lecture series has been arranged, and it is I got an opportunity to speak with the student, and I also remembered my college life. So I would start with one you know first day of my pharmacy college. So what happened is when we joined in pharmacy college, our principal asked each one of us that why did you come to pharmacy? So what was the reason that you joined this pharmacy profession? So I was the last person, last bench sitting, and I was very silent at that particular time. So you know, when we come, I was see I have done my career and my whole education in a very small village. You know, I used to go on bullock cart to go to college. Hello, ma'am. Dishu, Yeah, ma'am. Is it possible for to speak in bilingual means Hindi and English mixed? So I yeah, think sure, sure. student will gain more knowledge actually from you. Shall I speak in Hindi also? No problem. Completely, I can Yes, speak in ma'am. Hindi. Please, ma'am. Please. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you. So, uh, actually, we have habit of speaking in English after joining industry, but I would like to speak in Hindi as well, since I came to know that you know most of the students in the college are from Hindi. But frankly speaking, after 23 years, I am going back to speak Hindi. So, if any mistakes, please forgive me in this. सो कॉलेज का पहला दिन, और हमारे प्रिंसिपल जी ने हमको पूछा कि आप कॉलेज में फार्मेसी आपने क्यों लिया, अब क्या रीजन है कि आपने फार्मेसी ज्वाइन किया. तो हम 60 लोग थे क्लास में, और मैं लास्ट स्टूडेंट 60th. सब ने एक ही आंसर दिया कि सीईटी में उनको कम मार्क्स मिले
उनको मेडिकल प्रोफेशन, किसी को डॉक्टर बनना था, डेंटिस्ट बनना था, तो उनको वहाँ एडमिशन नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों ने फार्मेसी करियर अपनाया। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खुद अपने आप से फार्मेसी में आना था। तो मुझे ऐसा लगा, मेरा लास्ट नंबर था, मुझे ऐसा लगा मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। ऐसा क्या है कि सब लोग मेडिकल जाना चाहते थे और जब उनको एडमिशन नहीं मिली तब वो फार्मेसी में आए। तो मैं खड़ी हुई, सबसे लास्ट पर्सन थी, तो प्रिंसिपल ने बोला आई थिंक योर रीजन ऑल्सो वुड बी द सेम, राइट? तो मैंने बोला नो सर, माई रीजन इज नॉट द सेम, मुझे फार्मेसी में ही आना था। इनफैक्ट मुझे एडमिशन मिल रही थी मेडिकल में, डेंटल में, मुझे नहीं जाना था। तो मुझे पूछा गया क्यों नहीं जाना था, तब मुझे याद है जो मैंने आंसर दिया, आज वो आंसर आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत मायने रखता है। मैंने उनको ये बताया कि जब एक डॉक्टर गलती करता है तो एक ही बंदा मरता है। अगर डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी, किसी एक को ही परेशानी होती है। अगर फार्मासिस्ट ने कुछ गलती कर दी तो हजारों लाखों इंसान मर सकते हैं। तो अगर कोई बीमार हो गया, डॉक्टर सिर्फ ये बता सकता है कि इसको ये हुआ है, आप इसको दवाई दे दो, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो वो दवाई कौन बनाता है? तो फार्मासिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सब लोगों ने तब तालियां बजाई। और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब लोगों के दिल में, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स यहाँ होंगे जिनको ऐसा हुआ होगा कि मेडिकल में उनको एडमिशन ना मिली हो, इस बहाने वो फार्मेसी ले लिया, चलो अगर मैंने बायोलॉजी लिया है, मुझे मेडिकल नहीं मिला तो मैं फार्मासिस्ट ही बन जाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अतुल सर ने हमको बहुत अच्छे से बताया कि कोविड में क्या क्या हुआ, सब लोग कैसे परेशान हो गए थे। तो हमारे पास क्या था? पैसे थे, डॉक्टर थे, सब कुछ था, हॉस्पिटल्स थे, पर क्या नहीं था? दवाई नहीं थी। तो जब दवाई नहीं रहेगी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये चीज बहुत बहुत आप ध्यान में रखना कि हम कितने कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे उस वक्त, कि सब लोग देख रहे थे कि कौन बंदा है जो दवाई निकालेगा कोविड के लिए, कौन हमको हमारी मदद करेगा, कौन हम लोगों को इस महामारी से बचाएगा। तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका हो गया था? हम लोगों का हो गया था। तो सब सोच रहे थे कौन सी इंडस्ट्री रिसर्च करेगी, कहाँ से हमको दवाई मिलेगी। तो याद रखना कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए फार्मासिस्ट नहीं बने हो। फार्मासिस्ट ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की जान बचाते हो। आपकी वजह से आज, हमारी वजह से आज दुनिया है। आप अगर देखोगे कि कितनी सारी बीमारियां यहाँ पे आई है, और हमारी एक दवाई जब वो लेते हैं तो उनको एक सुकून सुकून मिलता है, एक उनके दिल पे एक खुशी होती है। कभी आपने देखा है, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि आपका सिर दर्द हो रहा है, किसी तरह से आप परेशान है, जब आप एक दवाई ले लेते हो आपको एकदम सुकून, चैन की सांस मिलती है। तो वो चैन, हम जो मुस्कुराहट हम लोगों के दिल में, हम लोगों के चेहरे पर लाते हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप फार्मेसी में कहीं भी हो, अगर आप एक ऑपरेटर हो कंप्रेशन मशीन के, और आप एक एक दवाइयां जब नीचे गिरती है, आप जब बना रहे हो, तब भी आप सुकून महसूस करो कि आपकी वजह से आज ये दवाई बन रही है। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपने अगर दवाई बनाने का फॉर्मुलेशन किया है, तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो कि आपने दवाई बनाई है आज लोगों के लिए। अगर आप क्वालिटी में है तो आपकी वजह से आज सबसे अच्छी दवाई मार्केट में जा रही है। आप देख रहे हो कि कभी कोई गलती हो जाती है, जैसे अभी वो जो सिरप निकला था उसमें ग्लाइकॉल पीईजी की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चे मर गए थे। तो उसमें किसकी गलती होती है? जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो हमारी एक गलती कितने लोगों की जान ले सकती है। तो हम इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज मतलब जैसे कोविड आया, कल कुछ और आ सकता है, परसों कुछ और आ सकता है। हमारी जो जरूरत है वो दुनिया में हमेशा बनती रहेगी। और इसीलिए सबसे पहले मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप फार्मेसी प्रोफेशन में आए हो, इसके लिए सबसे पहले अपने आप के लिए ताली बजाना कि आपने आज ये प्रोफेशन लिया है, और आप बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने लिया है, जिस प्रोफेशन की वजह से पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है। किसी ने आपको अगर आके कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया तो आप अपने आप को दे दो कि आज मैंने फार्मेसी में कुछ अच्छा काम, जैसे ही आपने फार्मेसी में पैर रख दिया है कॉलेज में, उसी दिन से आपने सबसे बड़ी चीज कर दी है कि आपने दुनिया की सेवा करने का की सब शपथ ले ली है। ये सबसे बड़ी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर एवरीवन दैट यू हैव एंटर्ड दिस इन फार्मेसी प्रोफेशन एंड यू आर सिलेक्टेड टू बिकम अ फार्मासिस्ट। ऐसा मत सोचना कभी भी कि मैं डॉक्टर बनता तो कितना अच्छा, ये डॉक्टर देखो इंसान की कितनी मदद करते हैं, दे आर वेरी गुड।
ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमारी है, हम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हम दवाई नहीं बनाएंगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये बात याद रखना। दूसरी चीज कि जब हम फार्मेसी बनते हैं, फार्मासिस्ट हो जाते हैं, हम हमारे पास ये बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, हमको जॉब भी नहीं मिलती, हमको तनख्वाह भी नहीं मिलती, पता नहीं आगे क्या करना है। तो उसके लिए फार्मेसी प्रोफेशन आज बहुत बहुत वास्ट है। आप ये मत समझना कि बस एक इंडस्ट्री है जिसमें दवाइयाँ बनती है और फिर हमको जॉब मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अतुल सर ने हमको पहले ही बताया है, तो आपके पास इतने सारे वेज ओपन है एंट्री फार्मेसी के बाद। अगर आप जैसे जिसमें आप मास्टर्स बनते हो, अगर आपने फार्मास्यूटिक्स में मास्टर्स किया, या फिर आपको क्वालिटी में इंटरेस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल में इंटरेस्ट है, आप अगर मेरा प्रोफेशन देखोगे, मुझे भी जब मैं फार्मेसी हो गई, मुझे तो देश की सेवा जरूर करनी थी। तो मैं आज भी ये चीज बता देती हूँ, मुझे देश की सेवा ऐसी ही करनी है कि मुझे ऐसे दवाइयाँ बनानी है जो बहुत कम प्राइस में बहुत गरीबों तक पहुंच पाए। यही मेरी ख्वाहिश है, और इसके लिए मैं पहले से ही फार्मासिस्ट बनना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं जिस गांव से आई थी, उस गांव में ना डॉक्टर थे ना फार्मासिस्ट थे। और मैं जब छोटी थी, आज तो सब बन गया है, आज बहुत सारी देश की प्रगति होती जा रही है, हमको सब चीजें मिलती जा रही है। लेकिन जब मैंने फार्मेसी किया 23 साल पहले, तो मैंने जैसे पहले ही बताया, मैं बैलगाड़ी में आके मैंने कॉलेज अटेंड किया है, और ये तकलीफ लेके हम लोग सीखे हैं। आप में से भी कोई लोग ऐसे होंगे जो इतने कम से, या फिर आपके घर में ऐसा सिचुएशन होगी, फिर भी आप आगे आके पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। तो जैसे हम लोग फार्मेसी कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले जो मैंने पहले ही बताया, तो आप मास्टर्स करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फिर आप पीएचडी तक भी जाओ, वो भी बहुत अच्छा है। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट है, या किसी को इंडस्ट्री चलानी है, कोई सोचता है कि मैं खुद की इंडस्ट्री रखूंगा। के बाद जब एमबीए करोगे, इसकी बहुत आपको माइन्यूट चीजें पता चलती है फार्मेसी से। तो जो फार्मेसी प्रोफेशन ना होते हुए जब इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उनको बेसिक्स पता नहीं चलती इंडस्ट्री में कि फेलियर क्या होता है, इसमें कितना ये गलत हो गया तो क्या होता है। लेकिन अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन करके एक बड़े एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए करके आप खुद की इंडस्ट्री जब चलाते हो, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। सबसे बड़ी चीज कि आपको बेसिक्स पता होते हैं और आप बहुत स्ट्रांग प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप फार्मेसी के बाद कर सकते हो। जैसे मैंने मास्टर्स क्लिनिकल रिसर्च में किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया, तो मुझे नई दवाइयाँ बनानी थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं खुद अपनी दवाइयाँ ऐसी बनाऊं जैसे वो गरीबों तक पहुंच पाए। जो महंगी दवा है कैंसर के लिए, थैलेसेमिया के लिए, सो वो दवाई इतनी महंगी होती है कि जो गरीब लोग हैं वो इतना उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सोचती थी कि मैं दवाइयाँ बनाऊंगी करके। मैं क्लिनिकल रिसर्च में मैंने मास्टर्स किया है, और मैं इसी को आगे बढ़ा के आज भी मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। तो मैं ज़रूर, जब मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं पीएचडी ज़रूर करूँगी। लेकिन अगर मैं उस वक्त करती तो और अच्छा होता। तो जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने करियर शुरू किया था सबसे पहले क्यूसी में। तो लैब में मैंने ज्वाइन किया, 3-4 साल मैंने लैब में काम किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। फिर मैं प्रोडक्शन में गई। प्रोडक्शन में जब मैं बैचेस बनाती थी, वो एक अलग तरीका करियर होता है कि आप टैबलेट्स में जो भी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में होते हैं, वहाँ पे आप फार्मेसी के बाद कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है और वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद किसी को अगर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मुझे रिव्यू में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे रिव्यू होते हैं, क्या क्या लगता है, तो आप क्वालिटी में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यूज़, ये सारे चीज़ें बनती है। और उसके बाद जब आपका 12-15 साल का करियर अच्छा से हो जाता है, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट मुझे ज़्यादा बाहर आए, कि मैं कहाँ अच्छा, और मेरा पैशन कहाँ है। तो सबसे चीज़ ये होती है कि जैसे फोकस तो जब आएगा जब आपको खुद को पता चलेगा आपका पैशन किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में है। तो ये जैसे ही आप आगे चलते जाओगे, फिर आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जैसे मुझे पता चला कि मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकती थी। जैसे मैं बैच भी मैंने जब बनाई, तो कुछ चीज़ें बहुत एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि फार्मेसी में हम लोग जब कॉलेज में थे, तब हम ओथ लेते थे ना, ओथ ऑफ फार्मासिस्ट। आपको याद है सब लोगों को? तो आप भी जब फार्मेसी कंप्लीट करोगे, आप एक ओथ लोगे कि मैं सब एथिक्स फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं आपको 1-2 इंसिडेंट बताती हूँ जो हमारे दुनिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कल ही लंदन से वापस आई हूँ।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बाहर बहुत अच्छा होगा, लंदन में बहुत अच्छा होगा, हांगकांग में बहुत अच्छा होगा, तो हम यहाँ से दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाना अलग है, लेकिन जॉब करने के लिए जब जहाँ जाते हैं तब बाद में हमको पता चलता है कि सबसे बेस्ट फार्मा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इंडिया में ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया में फॉलो नहीं करते, या फिर आज अगर हम क्लिनिकल रिसर्च करना चाहे तो इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर कंडक्टिंग एनी क्लिनिकल रिसर्च। तो कुछ अच्छे बुरे चीजें होती रहती है, लेकिन इंडिया में क्यों है, सबसे बड़ी चीज इंडिया में है जो नॉलेज पुल। हम जैसे आप जैसे अभी आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि आगे चल के आपको कितनी सारी दवाइयाँ इन्वेंट करनी है और कितने सारे रोग दुनिया में आएंगे। तो इसीलिए जहां भी आप जाओगे, कौन सी भी कंट्री में आप जाओ, सबसे ऊपर के पोस्ट पे, रिसर्च के पोस्ट में मैंने इंडियंस ही देखे हैं जो वहां जाके उनका पासपोर्ट ले लेते हैं या उनकी सिटीजनशिप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली बाय बेस वो इंडियन रहते हैं। आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मैंने पीएचडी करना क्यों सोचा। ये अभी की बात है, मैं लास्ट 2 मंथ्स पहले जर्मनी में गई थी ऑडिट के लिए, और मैं जिस ड्राइवर एक कार में थी जो मुझे दूसरी कंपनी में लेके जाने वाला था होटल से, तो मैं जब गई तो 6 बजे गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी में अलार्म आया और गाड़ी रुक गई। तो मैंने पूछा, भाई आपने यहाँ क्यों रोका, मुझे तो आगे जाना है। तब उसने बताया कि मैडम मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ। मैं सच बोलती हूँ आपको, सबसे बड़ा शॉक मुझे लाइफ का लगा कि अग्निहोत्र वर्ड मुझे पता था, लेकिन जर्मनी में किसी ड्राइवर को ये चीज पता है, ये मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। तो मैंने उसको पूछा अग्निहोत्र मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो? तब उसने बोला कि वी विल गेट एन अलार्म एंड एट द सनसेट, नाउ इट्स सनसेट, सो आई हैव टू परफॉर्म अग्निहोत्र, so I have to tell this swaha swaha and I have to put this rice into this agni which I am going to put। तो देखो वो जर्मन में है और उसने हमारे संस्कार जो भारत के संस्कार थे उन लोगों ने कितने कितने अच्छे से अपने आप में ले लिए। तब मैंने जाके बाहर में जब वापस इंडिया में आई तो 2 महीने से मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, अग्निहोत्र क्या है, उसमें क्या है। तो हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को ही पता नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आके ये सारी चीजें अपने आप में लेके आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है इस अग्निहोत्र के ऊपर, और अग्निहोत्र के ऊपर वो दवाइयां बनाने चाहते हैं, बहुत सारी दवाइयां बनाने वाले हैं, और उसके लिए वो कॉलेज में पीएचडी के लिए भी वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। और सबसे बड़ी चीज जो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग इसके लिए पेटेंट अप्लाई करने वाले हैं। और जब मैंने इसका इंफॉर्मेशन निकाला तो अग्निहोत्र हमारे इंडिया से ही पैदा हुआ है। तो बाकी के लोग अपनी चीजें यहाँ से, जैसे आपको पता चला होगा टर्मरिक, ये बहुत सारी चीजें भारत में है, इसको आप एज ए आप स्टूडेंट हो, इस सब चीजों को लेके आप देखो कि मैं क्या देख सकता हूँ अपने भारत में, क्या है जो मैं मिस कर गया हूँ, उसको लेके आप आगे बढ़ाओ और आपको बहुत कुछ मिलेगा जो यहीं पे है और यहीं पे मिलेगा। ऐसे सीखने के लिए आगे गए वो बात अलग है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ अलग है वहाँ अलग है। हम जितने अच्छे से अपनी इंडस्ट्री मेंटेन करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वो बात है। और दूसरी चीज एक बताना चाहती थी, जो इथिक्स में जो मैंने टॉपिक छोड़ दिया फार्मेसी का इथिक्स, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी हो जाए अपने इथिक्स मत छोड़ना, क्योंकि आपके ऊपर जब आप वो दवाइयाँ जब आप बनाने वाले हो, आप याद रखना आपकी माँ, आपके फैमिली के लोग वो दवाइयाँ खाने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज आप कभी भी मत छोड़ना इथिक्स, कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी परेशानी हो, मुझे कितनी भी टाइमलाइन हो, मुझे कितनी भी डेडलाइन हो, मैं कुछ भी शॉर्टकट नहीं करने वाला। अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर रही हूँ सपोज, तो मुझे अभी बैच रिलीज करना है, बहुत अर्जेंट है, तो मैं कुछ उसके लिए इंटीग्रिटी इशू कर दूं, ये कभी भी दिल में मत रखना। आगे चल के ये सारी चीजें अपने आप में लाना भी मत, क्योंकि आज इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर आप देख रहे हो कि अगर आप इंडिया के इंडस्ट्री के बारे में जब न्यूज पढ़ते हो तो एफडीए ऑडिट्स हो रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, है ना, हमारे कंपनीज में ऑडिट करते हैं और फिर वो हमको इंटीग्रिटी इश्यूज के लिए वार्निंग लेटर दे देते हैं। या फिर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे रैनबैक्सी है या ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको वार्निंग लेटर मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप जब आप फार्मेसी सीख रहे हो तभी आप अगर वो ओथ जो हम फॉलो करते हैं उसको आगे चल के अगर सच्चे से फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमको वार्निंग लेटर मिलेगा। तो ये जो आप जो यंग स्टूडेंट्स हो, आप ही ने इसको आगे लाना है कि आप ही ने इसको ओथ लेना है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। और ये मैं क्यों इतना आज बता रही हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आज इसका इंपॉर्टेंस क्यों लगा, तो मैं जब हांगकांग में जॉब कर रही थी
तब एक मशीन रहती है वहां पे, जहां से आप पैसे डाल के आप फूड निकाल सकते हो वहां से कुछ भी। तो ये मशीन उल्टी है, उसमें पहले आप फूड ले लो, उसके बाद आप उस पर कॉइन डालो। तो क्या हुआ, एक बार वो मैच नहीं हुआ, वो मतलब पैसे और फूड वो मैच नहीं हुआ। उस वक्त मैंने हांगकांग उसी दिन छोड़ दिया, क्योंकि जो अनाउंसमेंट वहां हुई, ओनली इंडियंस शुड वेट। ठीक है, सो ये अनाउंसमेंट क्यों हुई, उनको लगा कि ये सिर्फ इंडिया के लोग ही है जो ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने ही पैसे नहीं डाले होंगे और खाना ले लिया होगा। तो ये चीज जो आज कहीं कहीं पे आ रही है, ये हम लोगों को मिटानी है। मतलब आप जब बड़े हो, आप जब फार्मासिस्ट बन के इंडस्ट्री में आओगे, तो कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब हम बहुत बार, आप ये हमारा कल्चर कैसे है, अब हमको हेलमेट पहनना रहता है। हम देखते हैं पुलिस सामने है क्या, पुलिस नहीं तो हेलमेट, पुलिस है वो आपको पैसे देने पड़ेंगे या वो आपको पकड़ लेगा, इसीलिए आप हेलमेट डालते हो। तो याद रखना, हेलमेट पुलिस के लिए नहीं होती है, हेलमेट आपके लिए होती है। आपने हेलमेट डालनी चाहिए ताकि आपका प्रोटेक्शन हो, पुलिस को क्या मिलने वाला है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, पुलिस देखेगा, वो मुझे मुझे मेरे ऊपर कंप्लेन करेगा, इसीलिए आप हेलमेट पहनते हो। ये चीज हमारे कल्चर में, इसको आपने, सबसे बड़ी चीज है, ये सब छोड़ दो आप। मतलब ऐसा नहीं होता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट होती है। तो कोई मुझे देख रहा है इसीलिए मैं अच्छा काम करूंगा, ये कभी भी मत लाना दिल में। मुझे कोई भी जब देख नहीं रहा है तो भी मैं अच्छा ही काम करूंगा, ये होना चाहिए सबके मन में। तभी आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बन सकते हो। और आप, सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं आज जब रात को सोती हूँ, मैं चैन की नींद सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ भी गलती नहीं की है आज तक। ना मैंने कभी इंटीग्रिटी इश्यू किया है, ना मैंने ऐसी बैच रिलीज की है जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है या किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस वक्त 1 मिनट आप बचा भी सकते हो आपके काम का। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलर टाइट हो सकता है, मैंने 10 बैचेस रिलीज कर दिया आज, लेकिन अगर आपने उसमें किसी भी एक बैच में भी कुछ कर दिया है इंटीग्रिटी इश्यूज, तो आप याद रखना, आप लाइफ लॉन्ग ये सोचते रहेंगे, अगर किसी को कुछ हो गया तो, अगर कोई मर गया तो इससे अच्छा होता है कि सबसे बड़ी चीज जो फार्मेसी की जो ओथ होती है उसको आप फॉलो करो, एथिक्स के साथ फार्मेसी प्रैक्टिस करो किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाओगे। और जो आप ऑलरेडी मैं बोल रही हूँ कि आप कभी भी मत भूलना, आप सबसे, तब आप क्लीनिंग करते हो तो क्लीनिंग अच्छा है कि नहीं। तो वो जो क्लीनिंग पर्सन है वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसने क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया तो नेक्स्ट बैच में क्या हो जाएगा, वो कंटेमिनेशन हो जाएगा। फिर आपको सपोज अगर आप सोचो कि पेनिसिलिन में किसी की एलर्जी हो सकती है किसी को, अगर वो कंटेमिनेशन हो गया तो आगे का बंदा मर भी सकता है। तो इसीलिए एक क्लीनिंग करने वाला बंदा इंडस्ट्री में, वो लोगों को आपका इंपॉर्टेंस आज ही से समझ लो। आपके घर जाके अपने आप को सैल्यूट करो कि आज मैं फार्मासिस्ट बन रहा हूं तो मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं। मुझे कुछ भी ये बुरा नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बना या मैं कुछ और नहीं बना। आप सबसे बड़ी चीज बन रहे हो आज लाइफ में, फार्मासिस्ट होके आप बाहर आने वाले हो। फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें खुली है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर रिसर्च करना है, आपको प्रोडक्शन में जाना है, आपको खुद की इंडस्ट्री ओपन करनी है, आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है। रेगुलेटरी अफेयर्स भी एक अलग टाइप का प्रोफेशन है जिसमें आप हर एक कंट्री के रेगुलेशंस क्या है उसको स्टडी करते हो। फिर अपने प्रोडक्ट को अगर उस मार्केट में डालना है तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से क्लिनिकल स्टडी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे रेडी करना है, ये सारी चीजें होती है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। वो भी डिपार्टमेंट अच्छा है। तो आपको हर एक, आप जब यहाँ से आते हो आपके पास इतनी सारी, आप ऐसे हो जो आप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपके पास ओपन है। नहीं, अगर आपको इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो आप अपने खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो। आपके खुद के आप एक ये बना सकते हो जिससे आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। तो जिसको अगर खुद का पास, उसके पास एरिया है या फिर जगह है और आपको खुद बनना है तो आप इमीडिएट एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल स्टोर कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको और भी इससे कुछ और करना है जैसे, तो आप खुद, जैसे मेरे प्रोफाइल में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है कि आपकी इंडस्ट्री है नहीं लेकिन आपके प्रोडक्ट्स तो है। जैसे अभी इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको से 50 करोड़ रुपए लगेंगे, करेक्ट, लेकिन आपके पास सपोज आज 50 करोड़ है नहीं, लेकिन आपके पास उतने पैसे तो जरूर है कि आप आपका खुद का प्रोडक्ट सोच सकते हो। तब आप क्या करोगे कि
आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, सोचो कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर आपको खुद की इंडस्ट्री होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मासिस्ट है तो आप थर्ड पार्टी लाइसेंस ले सकते हो, आप उन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपकी दवा बना के आप सेल कर सकते हो। तो आपकी दवा आपके लिए उसके लिए 50 करोड़ होने की जरूरत नहीं कि मैं खुद की इंडस्ट्री में खुद की दवा बनाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आपकी खुद की दवा दूसरी कंपनी से बना के मार्केट में ला सकते हो। तो आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती है कि जब आप बड़े फार्मासिस्ट बन जाओगे तो क्या कुछ भी नहीं, जो भी आप सोचोगे आप कर सकते हो। किसी को अगर बहुत ज्यादा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है आप और आपके खुद के प्रोडक्ट्स लाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप मार्केटिंग वाला भी प्रोफेशन इनिशियल ले सकते हो, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स है, कहाँ है। जब आप खुद मार्केटिंग प्रोफेशन लेते हो तो आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया आती है कि कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं, कहाँ चलते हैं। फिर आप मार्केटिंग प्रोफेशन से आप खुद ही अपने दवाइयाँ बेचना और उसके आइडियाज बना सकते हो। और एक चीज बताना चाहती हूँ मैं जब फॉरेन में जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि फार्मेसी प्रोफेशन वहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब क्यों? उसका रीजन ये है कि डॉक्टर कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है। दूसरे कंट्री में जब आप जाओगे तो हर एक डॉक्टर को एक फार्मासिस्ट कंपलसरी होता है, क्योंकि दवाई लिखना, अगर डॉक्टर दवाई लिखेगा वो दूसरी कंट्री में अलाउड नहीं है। इसीलिए दूसरी कंट्री में फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई होता है जो दवाइयाँ लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए आप सोचो कि अगर ये लॉ हमारे लिए भी है, लेकिन हम इंडिया में इसको ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन कंट्री में कोई भी डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिखता है, हर फार्मासिस्ट ही लोगों को मेडिसिन देने का लीगल प्रैक्टिशनर होता है। कोई भी कंट्री में आप जाओ एक्सेप्ट इंडिया। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप जब लोग बड़े हो जाओगे, जब मतलब और कुछ सालों बाद ये जो लॉ है वो इंडिया में भी आ जाए, तो आप सोचो कि कितने सारे फार्मासिस्ट इंडिया में लगेंगे, क्योंकि डॉक्टर दवाइयाँ नहीं लिखेगा। कोई भी कंट्री में फार्मासिस्ट ही दवाई लिखता है, डॉक्टर नहीं लिखता। डॉक्टर सिर्फ लिखता है कि इसको बुखार है, फिर फार्मासिस्ट देखता है बुखार है तो फिर क्या है, उसका डोज कितना होना चाहिए, एज कितना है, जो हम फार्मेसी में बेसिक्स फर्स्ट ईयर में जब स्टडी करते हैं तो उस बेसिक्स में हमको पता चलता है हाउ। वहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहते हैं जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और वहाँ पे डायरेक्टली आपको स्ट्रिप्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, जो हम आज जाके ओटीसी पे लग जाके इतने सारे ड्रग्स लेते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये बड़ी डिफरेंस हमको दूसरी कंट्री में और हमारे कंट्री में देखने को मिलती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ दिनों बाद ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और शायद हमारे कंट्री में भी वो लॉ आ जाएगा कि फार्मासिस्ट ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। अगर वो आए भी ना, आज हमारे कंट्री में इसकी कमतरता है नहीं। मतलब आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी यार, आप बिना अनएम्प्लॉयमेंट के। आज तक मैंने कोई भी फार्मासिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं देखा है, आज तक तो मैंने नहीं देखा है। कुछ ना कुछ वो जरूर आपके लिए कुछ भी ओपन रहता है, कुछ नहीं तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हमेशा है। तो आप जैसे ही बाहर निकलते हो आप एक डिग्री होल्डर हो, जो डिग्री से आप कुछ भी कर सकते हो। सो ऐसा कुछ भी ये मन में मत रखना कि मैंने गलत प्रोफेशन ले लिया या मैं यहाँ क्यों आया। और दूसरी जो चीज में जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, और जो स्पेसिफिकली जो डॉक्टर सर ने हमको बताया, अतुल सर ने, कि कोविड, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जिस कोविड के वक्त जो हम लोगों ने सीखा, जैसे हम लोगों ने, आपको बता देती हूँ क्या हुआ था कि हम लोग भी ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। तो जो लोग हमारे कंपनी में से जो दवाइयाँ बनाते हैं उन लोगों को हमने स्पेशल प्रोविजन लेके, प्रोडक्शन के लोग हमेशा ऑफिस में गए। बहुत सारे लोगों को कोविड भी हुआ क्योंकि वो ऑफिस गए थे ना। वो उनको तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो दवाइयाँ बनाते हैं ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, वो भी सारे फार्मासिस्ट, वो तो ऑफिस में गए थे, उन्होंने दवाइयाँ बनाना तो बंद नहीं किया ना। तो हम लोग कितने हैं कि हमने अपने आप के लाइफ के बारे में नहीं सोच के, वो लोग खुद तैयार हो गए कि नहीं मैं आऊंगा ऑफिस, मैं बनाऊंगा दवाइयाँ, मैं नहीं रुकूंगा घर। तो हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी सेवा की है मानवता के लिए, कि हम खुद भी जानते थे कि अगर हम ऑफिस गए, मैं खुद भी, मुझे भी कोविड हुआ था, तो जब हम लोग जाते हैं हमको पता था कि शायद ऐसा होगा, जब हम जा रहे हैं ऑफिस, जब जाएंगे तो हमको भी कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। लेकिन अगर हम घर में बैठे रहते तो बहुत सारे लोग, कोविड तो एक बात थी, लेकिन आप सोचो कि कितने सारे दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में लग रही थी। जैसे अभी आपके घर में भी आप देख रहे होंगे कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, उनको डायबिटीज है, तो उनको रोज मेटफॉर्मिन या बहुत सारी टैबलेट्स लगती है। अगर मैं नहीं जाती इंडस्ट्री में, या मैं नहीं बनाती टैबलेट, या मैं नहीं बैच रिलीज करती,
तो ये सारे लोग क्या करते? एक बात थी कि कोविड, एक वो थी, तो अगर हम दवाइयां नहीं बनाते ऑफिस में जाके, तो वो सारे लोग दूसरे किसी चीज की वजह से ही मर जाते। कोविड तो अलग था, लेकिन जिनको रोज थैलेसीमिया जो है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको रोज बिना टैबलेट के लिए वो नहीं जी सकते। हम लोगों ने अपनी सेहत की परवाह नहीं करते हुए हम लोगों ने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस आज फार्मासिस्ट लोगों ने की है। ये तो है कि वो मेडिकल हॉस्पिटल्स में यहाँ वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन इंडस्ट्री की आप बात करो, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री बंद नहीं थी, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री से दवाई नहीं निकली, ऐसा नहीं था। तो सिर्फ इतना ही हुआ कि राउंड बेसिस पे आज हम लोगों ने लोग कम कर दिए, आज 50 लोग आएंगे तो कल दूसरे 50 आएंगे, ऐसे कर लग के, लेकिन हम लोगों ने कोई भी बैच रिलीज बंद नहीं किया, क्योंकि कोई भी अगर हम एक भी दवाई अगर मार्केट में हम बंद कर देते तो हम लोगों को कुछ किसी और परेशानी में हम लोग सब लोग फंस जाते आज। तो लेकिन जिन लोगों ने दवाइयां रेगुलरली सप्लाई की आज मार्केट में, इसीलिए जो बाकी सारे लोग थे जिनको दवाइयों की जरूरत थी, वो भी आज जिंदा है और खुशी से जिंदा है, ये भी याद रखना। तो हम कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे उस वक्त कि यहाँ भी हम मदद कर रहे थे, यहाँ भी हम मदद कर रहे थे, इंडस्ट्री भी चला रहे थे, दवाइयां बाहर आ रही थी। ऊपर से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पता चली थी कि चाइना मार्केट कंप्लीटली बंद हो गया था। अब अगर हम हमारे भी स्ट्राइड्स भी आप देखोगे तो हम तब तब जब कोविड आया था उस वक्त 70% हमारे एपीआई चाइना से ही आते थे। हर एक बहुत सारे इंडस्ट्रीज है हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज जो चाइना से ही एपीआई लेती थी, और बहुत सारे एक्सिपिएंट्स भी चाइना से ही आते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्री है जो ये सारी चीजें इंडिया में प्रोवाइड करती है। जब चाइना कंप्लीटली बंद हो गया, हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई कि क्या करें, अब कहाँ से मटेरियल मंगाए। फिर हमारे जो देखो, इससे इंडियन सप्लायर्स को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर हम एक एपीआई वाले के पास जाके पूछने लगे, तुमको ये दूसरा एपीआई बनाने को आएगा, तुम बना सकते हो? फिर उनमें रिसर्चर्स बन गए, उस इंडस्ट्री में कोई बन गया, ठीक है मैं बना के देखता हूँ। फिर आप सोचो कि हम लोगों ने इंडिया में कितना बड़ा डिफरेंट काइंड का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कि जो इंडिया में एक एपीआई बनाता था वो और 4 बनाने लग गया। वो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ। उस वक्त हमारे जो आप जैसे जो फार्मासिस्ट जो थे, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो या फिर मेडिसिनल केमिस्ट के जो लोग थे, उन लोगों ने थोड़े दिमाग लगा के नए प्रोसेस डेवलप करके हम लोग इंडिया में ही वो दवा एपीआई या फिर एक्सिपिएंट्स बनाने लग गए। इससे हमारी और सारी बाकी इंडस्ट्रीज जो एपीआई इंडस्ट्रीज थी, एक्सिपिएंट इंडस्ट्रीज थी, उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और उनको पता चला हम क्या, जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तभी अब हमको पता चलता है हम क्या कर सकते हैं, या तब तक हमको ये पता ही नहीं होता कि हम ये भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को कोविड ने सिखाई है। इंडस्ट्री में बहुत सारा चेंजेस हुआ है कोविड के बाद, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडस्ट्री पता चली है। और सबसे बड़ी चीज जो ये वर्चुअल जो आप आज हम लोग ये वर्चुअल लेक्चर सीरीज कर पा रहे हैं, ये सिखाया भी हम लोगों को कोविड ने ही है। तो जैसे अभी जब कोविड हुआ तो हम लोग ट्रैवल पूरा ट्रैवल बंद हो गया था, पूरी दुनिया में हम लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। उस वक्त हमारी, जब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जब हमारी मशीन खराब हो गई थी, एक हमारे पास एक जर्मन मेक की मशीन थी, वो खराब हो गई। फिर क्या करें, अभी तो वो जर्मन वाला तो पर्सन यहाँ नहीं आ सकता, फिर उसको कैसे लाए? तो फिर हम लोगों ने कैमरा विप्रो कंपनी को कांटेक्ट किया, उनको बोला कि हमको कुछ चाहिए जिससे वो जर्मन में से ये देख सके और ये मशीन ठीक कर सके। ऐसे बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन हो गई। तो उसने एक ऐसा कैमरा डेवलप किया कि जो भी बंदा पहनेगा उसको सब कुछ आगे सब दिखाई देगा, ये होगा। फिर उसका आप ये भी बढ़ा सकते हो कि बहुत माइन्यूट चीजें, माइन्यूट स्क्रूज वो देख सकता है, सोल्डरिंग देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। तो उससे क्या हो गया पता है कि हमारा जो ये वर्चुअल में हमारे कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से हो गई। तो ये जर्मन पर्सन जब हम उनको बुलाते थे इंडिया में, जब उनसे हम लोग ये मशीन ठीक करवाते थे, हम लोगों को कितना लॉस होता था, उसके आने का, एक्सपेंसेस जाने का। अब हम लोग सब वर्चुअली करने लग गए, हम सीख गए। हर एक अभी भी जब आज तो हम उसको बुला सकते हैं, लेकिन हम ये सीख गए ना कि ये वर्चुअली हो सकता है, हम सीख गए। इससे हमारी और जर्मन में नहीं, हम पूरी दुनिया में अभी ढूंढते हैं कि कौन मिलेगा एक्सपर्टीज। इंडिया में भी हम ढूंढते हैं। एक तो चीज हो गई कि जब तक ये वर्चुअल स्ट्रीमिंग हम नहीं कर पा रहे थे, हमने इंडिया में ही ढूंढने की कोशिश की, कोई है जो हमारे ये मशीन जो खराब हो गई ठीक कर पाए। तो हमको बहुत सारे टैलेंट इधर इंडिया में मिल गए। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम अपने आसपास ढूंढना छोड़ के हमको यही ब्रांडेड, इम्पोर्टेड, ये चीजें हम लोगों को एक बचपन से ऐसे आदत हो गई, इम्पोर्टेड, ब्रांडेड, और हमको वही चाहिए। लेकिन जब कोविड ने हमको ये सिखा दिया कि मेरा भारत महान, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ
कि कोविड ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये सिखा दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, अगर मैंने कुछ नासा के साइंटिस्ट का जब नाम देखा, या फिर मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स देखे, कहीं भी मैंने देखे, तो जो टॉप मोस्ट है वो सब इंडियंस ही थे। तो मैं यही, मुझे बहुत गर्व होता था ये सब देख के, कहीं भी मैं जाती हूँ तो बड़ी बड़े पोस्ट पे आप देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप देखो, तो सबसे अच्छा एजुकेशन जो हमको बचपन से मिला है वो इंडिया में मिला है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। उसके वजह से हम इंडस्ट्री में, जैसे आपने मेरे करियर में देखा होगा कि ओएस इन्वेस्टिगेशन जब फेलियर हो जाता है तो हम लोगों को एक अलग स्किल होता है कि ये क्यों हुआ होगा, वाई, क्योंकि हमको बचपन से वैसे आदत होती है कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम फॉरेन में जाते हैं तो अभी आपका बल्ब चला गया है, ठीक है, घर में, आप क्या करोगे? आप सोचो कि आप घर में हो, आपके घर में बल्ब चला गया है, आप क्या करोगे? आप जाओगे शॉप में, बल्ब लेके आओगे, वहां बिठा दोगे, बल्ब चालू हो जाएगा। ट्यूब चला गया तो आप जाओगे शॉप में, लेके आओगे, लगा दोगे। लेकिन यही चीज फॉरेन में वैसे नहीं होती है। बल्ब चला गया तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, इलेक्ट्रिशियन आता है, वो वेट करते हैं 3 दिन, वो बिना बल्ब के रहेंगे घर में, लेकिन कोई भी वो बल्ब निकाल के लगाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो हम सब लोग मल्टी टैलेंटेड है यहाँ पे। और ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग सोचते भी नहीं है कि वो बल्ब निकाल सकते हैं और बिठा भी सकते हैं। तो हम लोगों ने बचपन से ये सारी चीजें सीखी है, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग। तो हम लोग मल्टीटास्कर्स है, इसीलिए हम हर एक पोजीशन, जो भी पोजीशन पे आप जाते हो, ये हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस हमको क्यों आता है? आप जब देखोगे तो ये कैसे क्यों हो जाता है कि हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस, ये इसके लिए आता है क्योंकि हम लोगों ने बचपन से इतनी चीजें मतलब मल्टीटास्किंग की होती है कि हम बहुत आसानी से ये चीज ले, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ अलग सा किया। लेकिन जब वो लोग ये सब चीजें करते हैं तो उनको उसके लिए बहुत ज्यादा पेन लेने पड़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, या फिर, लेकिन हम ऐसे ही कर जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत सारी चीजें सीखी होती है, बिना किसी परेशानी की सीखी होती है, और हम अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें सीखी होती है लोगों से। ये और कैसे हो जाता है ये चीजों से, जब हम फेलियर्स में जाते हैं, जो मैं आपको बता रही थी, कोई बैच अगर फेल हो जाए तो हम लोग बहुत उसके ऊपर सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। हम सोल्यूशन इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो सोचने की ताकत होती है, और वो ताकत आपके पास तभी आएगी जब आप ये बेसिक्स जो फार्मेसी के हैं ये बहुत अच्छे से सीखोगे। आप कोई भी चीज, फार्मेसी की कोई भी सब्जेक्ट, फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है वो कोई भी आसानी से मत लेना। मतलब जस्ट अरे आज मुझे 20 मार्क्स लाने हैं, बस मैं 20 मार्क्स तक पढ़ूंगा क्योंकि मुझे उसके लिए फिर 60 लाने हैं फाइनल एग्जाम में, ये मत सोचना। क्योंकि ये सारी चीज जो आज आपके पोर्शन में है, मैंने जब, मुझे आज भी याद है, लैकमैन बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फार्मास्यूटिक्स का जो लैकमैन बुक था, 2-3 साल मैंने फार्मेसी के कॉलेज में पढ़ा था। आज वो लैकमैन में जो मैंने कैपिंग और चिपिंग वो सब जो चीजें पढ़ी थी, जब आज मैं जाती हूँ, जब इनको प्रॉब्लम आते हैं, जब आप क्वालिटी डिपार्टमेंट लीड करते हो, कोई बंदा आपके पास आ जाएगा, मैडम ये बैच पास नहीं हो रहा है, चिपिंग आ रहा है, तब मुझे याद आता है, अच्छा फार्मासिस्ट, वो हमारा लैकमैन बुक था, उसमें लिखा था क्यों आता है। फिर हम लोग, अगर आपने फार्मेसी के एजुकेशन में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की तो आपको कभी भी आगे चल के उसका फायदा नहीं होगा। हर एक चीज वो जो हमारे बुक्स में लिखी हुई है वो हमको आगे इंडस्ट्री में उसको, उस सारी चीजें जो हमने सीखी है बुक्स में, इसको हमको यहाँ पे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। याद रखना, सिर्फ आपको टीचर के लिए मार्क्स लेना है या फुल मार्क्स लेने हैं, उसके लिए आप फार्मेसी मत पढ़ना। उसमें जो इंजीनियरिंग भी होते हैं, जो आपको, आप सोचते होंगे ये क्या मुझे इंजीनियरिंग, ये क्या मुझे इक्विपमेंट पढ़ने के लिए बोल रहे हो, इसमें कितना बोर है, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, आप ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जो इक्विपमेंट्स आप फार्मेसी में वहां आप जो पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक्स, वही जब आप यहाँ आओगे इंडस्ट्री में आपको वही दिखेगा जो आपने यहाँ पढ़ा था। अच्छा ये पंच है, अच्छा ये डाइज है, तो इसको आपको कंप्रेशन का होता है, कंप्रेशन फोर्स होता है, ये होता है, ये सारी चीजें आप एकदम माइन्यूटली पढ़ो, क्योंकि आगे चल के जो इंडस्ट्री में वही सक्सेसफुल होता है। किसी भी पोस्ट में, आप प्रोडक्शन में जाओ, आप क्वालिटी में जाओ, आप लैब में जाओ, जब आपने ये बेसिक्स ऑफ फार्मेसी, ये सारे 3-4 बुक्स जो हमारे पास होते हैं, ये अगर आपने ठीक से पढ़े तो आप यहाँ बहुत आसानी से, आपको कुछ भी नहीं लगेगा फार्मेसी इंडस्ट्री में, क्योंकि तब आपने पढ़ा रहता है, आपका नॉलेज ऑलरेडी फ्रेश होता है और आप ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ पास होने के लिए अगर फार्मेसी किया होगा तो फिर आपको कुछ भी याद, फिर आपको सिर्फ याद आएगा अरे मैं पढ़ता तो कितना अच्छा था उस वक्त, ऐसा होगा। तो ऐसे फिर क्या हो जाएगा, आप हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस टैलेंट नहीं बन पाओगे। अगर आपने फार्मेसी एजुकेशन ही बहुत दिल से ध्यान से किया तो आप आगे चल के कोई भी चीज बहुत आसानी से, आपको कुछ भी नहीं होगा, किसी भी आप कोई भी फील्ड में जाओ,
किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने फार्मेसी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एग्जाम्पल, आप फिजिकल फार्मेसी की जो बुक आती है अपना, रेन एंड मार्टिन, है ना, और तभी तो हम लोग ये पढ़ते थे। आज अगर बुक्स चेंज हो गए होंगे तो अभी मुझे इतना पता नहीं है। यही चीज़ है कि आज मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिला है कि मैं भी पीएचडी कंप्लीट करूँ। तो वो सारी बुक्स जब मैं पढ़ती थी तब मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्या है विस्कोसिटी कितना। लेकिन आज जब ऑइंटमेंट में कोई बैच फेल हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि वो विस्कोसिटी का कितना इंपॉर्टेंस था। तो सबसे पहली चीज कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसको ध्यान लगा के पढ़ना। यही सारी चीज आपको इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करनी है। आज आप पढ़ रहे हो, कल आप जब वहां से बाहर आओगे तो आप उसको प्रैक्टिस करने वाले हो। हर एक चीज, हर एक बुक्स, हर एक नोट्स प्रैक्टिकल। आप जब प्रैक्टिकल में कुछ चीजें बनाते हो, आप कुछ भी बनाओगे, शैम्पू बनाओगे, वॉट एवर यू विल मेक इन योर प्रैक्टिकल्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ आके आपको वही बड़े बड़े इसमें बनानी है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें जब टीचर आपको बताएगी वो मिस मत करना, क्योंकि वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। और इसी के साथ मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इंडस्ट्री के बारे में या कुछ भी पूछना है, आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हो। और मैं और एक छोटे से इससे, अगर आप तब तक आप क्वेश्चंस के बारे में सोचो, एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो मैं हमेशा मेरे ऑफिस के लोगों को भी बताती हूँ। तो मैं हांगकांग में थी और मैं घर में आई थी मेरे पेरेंट्स को मिलने के लिए। तब मेरा एक कजिन है जो तभी 30 एज का था, वो मुझे मिलने के लिए आया और उसके पास टाइम नहीं था, वो ऑफिस जा रहा था। तो मैं पार्किंग में आके उससे बात की, मैंने हाय हेलो बोल के, मैं कल जा रही हूँ, ये सब हमारा डिस्कशन हुआ और वो चला गया। वो जैसे ही चला गया उसी के फोन से मुझे कॉल आया 5 मिनट बाद। तो मुझे लगा वो कुछ भूल गया होगा इसलिए उसने कॉल किया। तो मैंने कॉल जब उठाया तब वो कॉल था किसी रिक्शा ड्राइवर से। उसने बोला ये आपको जानता है, लास्ट डायल नंबर आपका था, इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं तब 5 मिनट में एकदम परेशान हो गई। जैसे आप ये कॉल सुनते हो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो जब आपका बहुत क्लोज होता है आपको बहुत बुरा लगता है उसके बाद। तब मैंने बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके मैं उसके पास चली गई। फिर देखा उसको बहुत लगा हुआ था। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके गए। उस दिन संडे था, ठीक है, उस दिन संडे था। हॉस्पिटल जब मैं लेके गई तब वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं थे, क्योंकि संडे होने की वजह से कुछ स्पेशल डॉक्टर्स नहीं आते थे उस वक्त। तब मैं बहुत परेशान हो गई। उस हॉस्पिटल से मैंने उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके गई। उस वक्त उन्होंने एक ड्रग मुझे लिख के दिया और मैं जब ढूंढने लगे तो मेडिकल स्टोर भी आधे से ज़्यादा मेडिकल शॉप बंद थे उस दिन संडे होने की वजह से। तो सिटी में 2-3 ही शॉप्स खुले थे। वो ड्रग ढूंढने के लिए मैं वहाँ गई। मैंने किसी एमआर लोगों से कल बात की, वो बोले मैं 1 घंटे में ला के दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ डॉक्टर्स उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली आप सब लोगों को पता होगा कि क्या हो सकता है। तो हम लोग उसको नहीं बचा पाए। बहुत मेहनत की हम लोगों ने कि कैसे उसको, कितने सारे, कहाँ हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बहुत सारे पैसे थे हमारे पास, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये याद रखना कि हम कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, आप 1 घंटा भी किसी के लाइफ का नहीं पैसे से खरीद सकते। उसके लिए सबसे बड़ी चीज मैंने उसमें लाइफ में तब सीखी, टाइमलीनेस। तो मैं यही चीज ऑफिस में भी बहुत बार लोगों से बताती हूँ कि क्या हो जाएगा, चाहे तो मैं कल कर दूंगी ना, कल बैच रिलीज हो जाएगा, कल कापा क्लोज कर दूंगी, कल मैं इसको रिलीज कर दूंगी। कल नहीं होता है आपके पास, आपको भी पता भी नहीं होता है कि कल आपके पास होता है कि नहीं होता है। तो आप जब ये प्रोफेशन लेते हो तो टाइमलीनेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मत सोचना कि आप, अगर वो सपोज वो बैच अगर मार्केट में होती, वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में होता तो शायद मैं उसकी जान बचा पाती थी। तो इसीलिए हर एक चीज, हर एक ड्रग, हर एक चीज किसी ना किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती होगी लाइफ में। तो ये टाइमलीनेस हमेशा फॉलो करना कि मैं कल कर दूंगा, मैं परसों करूंगा, ये नहीं है। एज ए फार्मासिस्ट सबसे बड़ी चीज हमको लाइफ में सीखनी है टाइमलीनेस। क्योंकि हमारे वजह से बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे जो अपने अपने जी जान से या किसी किसी वक्त जान के लिए भी तरस रहे होंगे, हमको पता भी नहीं है, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो अनजाने में अगर हम कुछ चीजें जब डिले करेंगे या ना बाद में करेंगे, ऐसे जब सोचते हैं तो हम शायद किसी की जान जोखिम में भी डाल सकते हैं, ये हमको पता भी नहीं होता है। तो लाइफ में जब आप इंडस्ट्री में सबसे पहले आप कदम रखोगे तो 2 चीज याद रखना, इस फार्मेसी का कभी भी मत भूलना, क्योंकि आप किसी की जान लेने के लिए नहीं आए हो, किसी की जान बचाने के लिए आपने फार्मासिस्ट का प्रोफेशन लिया हुआ है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना लाइफ में कि जिसकी वजह से किसी की जान आपकी वजह से जाए। और दूसरी चीज टाइमलीनेस, कि आपका हर एक सेकंड करियर में, कहीं भी प्रोफेशन में आप जो भी रोल लोगे, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके
जितना टाइम पे आप काम कर सके, आप सोचना कि मैं अगर इसको डिले करूंगा तो शायद एक दिन बैच लेट जाएगा, शायद किसी और को दवाई नहीं मिलेगी। ये सोच के हमेशा टाइमलीनेस फॉलो करना। ये 2 चीज़ों से ही मैं आज मेरी बात यहाँ रोकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें मुझे पूछनी है, आप ज़रूर पूछना। और जो दूसरी चीज़ जो हमेशा लोगों के मन में होती है, जो वुमन या लेडीज़ या वो जो यहाँ रहेंगी, वो सोचती होगी कि कैसा है प्रोफ़ेशन? मैं लड़की हूँ, फिर मैं कैसे? तो आज करंट सिचुएशन में इक्वालिटी का कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? मतलब पहले कैसे हम जब छोटे थे तब ये था कि ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगी, ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम इक्वालिटी से बाहर आ गए हैं और आज हम सोच रहे हैं इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। इक्वालिटी क्या होता है कि वुमन और मेन दोनों को, मतलब दोनों को सेम तरीके से आप दो। जब लड़के को दे रहे हो लड़की को भी दो, इसको इक्वालिटी बोलते हैं। पहले कैसा था, ये नहीं था हमारे देश में, तो हम लोग इससे स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो इक्विटी के लिए इंपॉर्टेंस आ गया। इक्विटी मतलब उसका सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास अगर 3 एप्पल है, 3 सेब है आपके पास, और आपके पास 3 लोग यहाँ पे है, तो पहला बंदा जब आपको बोलता है कि आप भूखे हो, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैंने सुबह ही बहुत खा लिया है। दूसरा बंदा है जो बोल रहा है मैं कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। और तीसरा बंदा जब है वो बोलेगा कि मैंने थोड़ा खा लिया है लेकिन मैं बाद में भी खा सकता हूँ। तो आप ये 3 में से एप्पल किसको दोगे? ये जब आप सोचोगे तो आज फार्मा इंडस्ट्री में इक्विटी चल रहा है, तो आप दूसरे बंदे को दोगे क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया है। कोई लड़की है इसीलिए लड़की को देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको इस प्रोफेशन में कोई भी तकलीफ नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखे हैं कि बड़ी बड़ी मशीन्स भी लड़कियां चलाती है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स में वो रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू भी लड़के बहुत अच्छे से करते हैं। सो ये आपके लाइकिंग के ऊपर है कि आपको क्या करना है। अब अगर मेरा करियर, आप मेरा खुद का करियर देखोगे तो मैं 70% ट्रैवल करती हूँ। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, ऑडिट्स, इसमें बिजी रहती हूँ। तो सारे जो लोकेशंस पूरी कंट्री में हमारे जो लोकेशन फैले हुए हैं खुद के साइट्स के, उसके ऊपर भी प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेरा बहुत सारा टाइम ट्रैवलिंग में जाता है। मैं हर एक साइट पे जाती हूँ वहाँ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं ट्रैवल क्यों करूँ। तो आपको जो आपका पैशन है उस पैशन के ऊपर आप काम करो। फार्मा इंडस्ट्री में आज ऐसा प्रॉब्लम है नहीं कि कोई चीज लड़की कर सकती है, कोई चीज लड़का। तो ये सब चीजों से मन से निकाल दो। सब लोग इक्वल है। अब लोग सब इक्विटी के ऊपर जा रहे हैं, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको मिलता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान देना। तो ये सारे दिमाग में ये सारी चीजें निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई भी नहीं कर सकता। सो जस्ट आपका इंटरेस्ट चाहिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको, इंटरेस्ट को संभाल के आप आगे बढ़ना। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये करूंगी और या ये करूंगा। जस्ट आपका पैशन समझ लो और उसको फोकस करो, उस पैशन को, और उसको अचीव करने के लिए आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए वो देखो। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? Anything more you want to know from me? हेलो, हेलो भाग्यश्री मैम। देखने अब वॉइस बेटा, वॉइस कम कर दी है आपने। वॉइस कहाँ से आएगी?
Hello, Bhagyashri ma'am. नहीं Yeah. ठीक है मेरा हेलो भाग्यश्री मैम Yes, भाग्यश्री yes, मैम ma'am. प्रणम इज ऑडिबल हेलो मैम That time he was audible. He asked whether I am audible. Yes. Now, yes is he speaking? you are audible ma'am but we people are audible or not actually we are not getting that one hello ma'am Ma'am, am I audible? Yes. Yes. Ma'am, students are asking which subject is best for clinical research. Now again you became unaudible, but when you are asking, that time you are audible. Ma'am, students are asking which subject is best for Yeah. clinical research. hello hello ma'am hello ma'am I think there is a disturbance. You can call me if you want and ask okay questions. call करके yes yes Or you can type. Hello. Yeah, so I got one question that which subject is best for clinical research? Very honestly speaking, that depends on your choice. So there is nothing like best and not best. It depends. Say for me, I had taken a subject of India as a place for clinical trials. That is one. And another point is, as I had informed you earlier, that I was very much interested in Indian culture, Indian. So now I am doing research on Agnihotra. So the healing effect of Agnihotra and why people are so much doing it and what are the effects of it. So if you have any interest in what is your own subject, you can perform clinical research. There's no problem on that. And you can also see the current trends, like what are the, say for example, currently what is going on is cancer. What are the diseases which we are foreseeing. So why we are seeing those type of diseases would be because, like for example, we are getting a lot of hormonal imbalances. Why this is happening is maybe because we have forgotten the food or the culture which was practiced before. We are more dependent on outside food, and we stopped our taking healthy foods. We are too much eating what is having preservatives, or we are many times we are exposed to say for example, now your equipments or your laptops and all those things was not there earlier. So currently, since we are exposed to a lot of chemicals, even if you'll see there is a lot of pollution, so you might get diseases like, there are current diseases which are very strongly going on is your skin ailment, psoriasis, and because people are applying a lot of cosmetics, hence what they will do is they will, we will have a lot of upcoming, if you'll see, these would be the common problem which all people will have. So what will be the common problem they will have is hormonal imbalances, right? After that you might have skin diseases. So you can pick any such type of topic and you can go ahead, so that when you will come back within 3-4 years, you will get a lot of name, and that would be more preferred type of uh, because of pollution or other things what is going to happen. That can be a one subject for searching medicines, or you can go and work on that.
um, there it's not that no industry appoint freshers easily. So I'll tell you the reason. Because in pharma industry, our job is very very important, in the sense like, you are doing very important activities. Say for example, when you are making a tablet and all, you should have little bit knowledge about it. Otherwise, if you make a mistake, okay, that mistake will be giving a lot of high impact either on industry or the patient safety. So basically, patient safety is very much concern in an organization. Hence, freshers, they would not be appointed if the industry is not having any opportunity for research or any other such type of areas of in the industry. But if an industry there is a research opportunity, or there is a quality opportunity, clinical research organizations, or they are having such type of organization, they will surely take freshers in the industry. We take freshers in our industry, so we have a separate, when we take them, we train them and we see where they are very good, and we post them in that particular department. So after B pharmacy, you can join industry. As I said earlier, so after B Pharm, if you want to join industry, it would be little bit a difficult task. So better you pursue your career until at least till masters. But however, still, if you want to join, there are many organizations which take freshers only. And what will be the best job after B Farm? So as I mentioned earlier, so it depends on what is your choice, what is your passion into. So say, as I told you, so earlier I was also not knowing what would be my like. So I first started with QC. So in lab, what will be there? You will be analyzing. If when you are now doing pharmacy, you see in which practical you are good. Say for example, if you are very good in pharmaceutics, then you might like a production area. If you're very good in analytical, medicinal chemistry, we have one practical, right? If you're very good in that, you might be doing a very good job as a quality control person. If you're very good in reviewing, learning, and you are very good in the topic of regulatory affairs, you can go into review and quality assurance. But my suggestion would be, first always work on shop floor. Okay, shop floor quality assurance department means working, giving your expertise. So always start your career after BPharm on shop floor. Means either you work in production or you work in quality control, and then you try to come in quality assurance, because quality assurance is more of giving your brain, working brain. Say for example, we say quality assurance is the brain of the industry, and production or manufacturing is the heart of the industry. Because in quality assurance, you will always be using your brain, your knowledge, your expertise to give suggestions to the heart, or to see whether heart is working properly or not. So basically, you start with your heart. So you start with the manufacturing or quality control area, so that you gain knowledge, and then you can utilize your brain in a right way. That would be my suggestion. So directly, if you come to quality assurance without any knowledge of shop floor, while doing investigations or giving any suggestions, it becomes little difficult. But if you have already worked, so no one can fool you. Say, I'll tell you, when I was asked to make SOP, like a standard operating procedure, मुझे बोला था कि आप SOP बनाओ किसी चीज का, तो मैं एक ऑपरेटर के पास जाके खड़ी रह गई. मैंने उसको बोला कि ये मशीन मुझे दिखाओ चलती कैसे. फिर उसने मुझे स्विच ऐसे ऑन करो, ऐसे चलाओ, वो मैंने देखा और वही मैंने स्टेप्स SOP में डाले. इसीलिए आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको पहले शॉप फ्लोर का नॉलेज होना चाहिए, तब आप अच्छे से क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हो. What are the keys of discipline in an industry, in life? So discipline is not only in industry. So now if you'll see, we are working on disciplined thought, disciplined actions. So it is very, very important. So if you are disciplined in your, it is not only in industry, in your life also you should be disciplined. If you are a disciplined individual, say for example, you listen to elders, you listen to your parents, you listen to teachers, or you listen to yourself. Say today you decide at 6 o'clock I'll get up and I will do this. But what will you know? It's okay, tomorrow I'll do. So if you will learn this, then you will not get success in your life. So first thing is, disciplined actions will bring a disciplined thoughts. Disciplined thoughts will automatically give you a success in your life. Whether it is an industry or your own, whatever you do, you have to be disciplined. Doesn't matter whether you are working in industry or you are doing a business. And we are actually eager to get disciplined people in our life, in our industry. We are waiting for that. If we get a disciplined people, we take them to a very high levels. Someone is asking how to handle a negative feedbacks. Let me correct you first point. Okay, a feedback is never negative or a positive. Okay, there is no negative or positive thing in a feedback. Feedback is a feedback.
right? So you, because we assume that I am right, or we assume that what I am doing is correct, we think the other person is giving us feedback which is negative. It is not like that. So always learn in life to take feedbacks positively. It is like that. So feedback as such is never negative or positive. It is given to you based on something which is seen by some other person within you. So you try to think over it, think, give a thought. Oh, this is being said. Whether I am doing it, what should I correct it? How should I correct it? Whether it is required to correct or not. You give a thought on this. But any feedback is given, please take it positively. It is never a negative. Okay, it is always beneficial for your own growth. All feedbacks given in any stages of life, whether it is from parents, your friends, your teachers, please take all the feedbacks positively and always try to work on that. Then whether it is you try to see, that is perceive. Feedback means what? Sometimes we feel I am very nice, I know everything, but feedback is what? That what others are thinking about you. They are perceiving you by your behavior, right? So when they are perceiving you as an individual by your behavior, they are having some thoughts in your mind which they give you as a feedback. So what is your behavior creating an impact on other people is feedback what they're giving to you. So that is never positive negative. They might be perceiving you like that. You might be thinking I'm like this, but they are, if they are telling you something and they're perceiving like that, you should try to correct the image of the thoughts. Okay. uh, Priyanka Raut from B Pharmacy first. What qualities does a pharmacist need to succeed in the role? So these two things I already told. So first point, you should be very ethical as a pharmacist. Whatever active, whether you go in any department in your organization, don't forget you are making medicine. Your one wrong act can kill someone. Okay, it can kill. It can go to the level of killing someone. Okay. Apart from that, like for example, if you did something and like integrity, anything, so organization might get shut because of you. So first point, remember you should always be following ethics in your life. Don't do anything wrong which will create problem to others or which will give a issue to the patient's safety. And second point, if you want to succeed in any of the role or in your life, whatsoever you are doing, be disciplined. Always remember, discipline helps us a lot. So when I was young, and my grandfather used to always tell, 7 o'clock you must be here and you should say some shlokas in front of God. I used to get, sometimes I'm playing outside, I'm studying, whatever things we would be doing at that particular time when you are kids or you're young. So we get irritated with the thoughts of that grandfather. Oh, why he's calling simply 7 o'clock? It's okay, no, I can come after some time. But we had a rule in our house. So 7 o'clock we should come and we should sit in front of God. We should lamp. So at that particular time, we might get irritated thinking, what is this? But they are teaching you discipline. They are teaching you that at 7 o'clock you need to be disciplined yourself to come and sit near God. So sitting near God might be a thing they are trying to tell you, but 7 o'clock you must be in your house. That is what discipline they at that age, older people might be giving to you. So some of the discipline which is taught, please remember, that is very, very essential for your life. Whether it is any kind of discipline you are continuing. How to mold self when we join an industry or in any workspace. So first thing is you have to follow the instructions and SOP. So automatically, so when we also come in industry, we might be coming with so many curiosity, so much knowledge which we would have gained from outside. So first stage would be try to understand what is the practice of the industry or what is the standard operating procedure for that particular organization. So when you start following that instructions which is given when we join an industry, automatically, whether you like it or you don't like, you get mold yourself to that. But never fall into a negative wrongdoing. Say whether anyone has informed you to do something wrong, you don't say yes to that. Follow your ethics first. But when we try to follow the SOP, automatically you will get mold yourself to the SOP which is there of the organization. You don't have to do any such different practice for that. Just try to listen to the instructions and follow the instructions. Automatically in your workspace, if you try to follow the instructions, you get mold towards the industrial norms. But you don't follow prey of any negativity. That is most important. Don't leave your ethics aside to change yourself or no need to change in that aspect. If you're thinking something wrong has happened, you please inform. You don't have to change, completely mold yourself when we join an industry. It's not required. The only thing, what as I mentioned, so like today if you might be getting up and sleeping, so now when your industrial timing is 9 o'clock, obviously you have to get ready and go to company to punch yourself at 9. So automatically you have to be disciplined to reach at office at 9.
So someone has written that, is it possible for your company to arrange? Yes, we do have campus selections for freshers. I will check with my HR and ask them to see the possibility if we can have placements for us, for you all people. Yes. So, what steps pharmacy graduates take to enhance their qualifications? As I informed you, first point is you try to learn as much as possible, become a masters, or you learn up to PhD also, because that is very very important when you join pharmacy. Initially, it is very curiosity for us, but later on, we at a particular stage we also realize that we must have done masters, we must have done PhD. So that is very very important. So try to achieve the highest degree as much as possible, or if it is not while doing study, while working, you try to never stop education, never stop learning. Okay, the enhance your qualifications and increase chances of securing job placement is through continuously learning. I'll tell you one example slide. Now you can see that everywhere there is a robotic things happening, right? So everywhere IT industry is growing in such a high extent. So you should have to mold yourself to learn those new skills which are now currently growing on. So if I would be like 23 years back, I was writing audit reports. Now we have to type it, or and later stage we are talking and it is getting typed. Or if you will see in an industry, what is happening is everything has become IT enabled. Wherever we are, people are going towards IT enablement, right? So we also should make ourselves to these type of say an example I'm giving today. We are giving virtual lecture series, right? Many people would be thinking that I am not good into virtual lecturing, I want to talk to people in face to face. That is true that if you talk face to face, it gives a different effect, but I cannot say like that I don't want to learn this type of technique. We have to adhere and get knowledge and try to always enhance our knowledge what is going on in the industry and learn more and more. Learning never stops, even until whatever age you go. Remember this. So whatever is going on, we must learn. New guidelines changes, everything changes every time. So we need to be always up to date with the current knowledge. What problems do you feel are the most difficult to deal within a pharmacy, and why? So for according to me, I will answer this question. So as continuously I'm talking like ethics, right? So in any organization, you might come across a situation wherein you have to select between right and wrong. So sometimes there would be, like, for example, you might risk your job if you want to do right. So we should be having courage as a pharmacist to not wrong thing to happen in life and always stick to the right things, irrespective if you lose your job. You should, as a pharmacist, you must first practice the ethics. You don't bother. You might get another job, but you will never get a person if died because of you. You will never get that opportunity again. So I am very much particular about my ethics. I had never done any wrong thing in my life. That is sometimes very difficult to deal with, because we might have work pressure, we might have other things to do, and hence you might come across certain situations in pharmacy or in as a working professional that you have to compromise. But we should be always strict, and we should never compromise is what I say. It's okay if 5 minutes there is a delay, but I will give a right things in my life. So that is most important thing. And for placement, what qualities are needed is your knowledge. So initially, see, I'll tell you. So when now you are seeing my resume with experience, right? So but when you are approaching as a pharmacist, what you learned during your pharmacy, those basics questions will be asked. What you learned in your B pharmacy, that basics questions will be asked. Then your communication skills will be tested, whether you are properly communicating, whether you are trying to understand the questions asked by the interviewer. So initial stage, as a fresher, when you are, आप जब फ्रेशर बन के ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो आपने फार्मेसी में सच में पढ़ाई की है कि नहीं, यही चीज़ें देखने लगेगी. तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यही ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपने सच में पढ़ाई की है कि आपने बस पास किया है फार्मेसी. ऐसे नॉलेजेबल इंटरव्यू, हमको इंटरव्यू लेने का ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप इंटरव्यू कैसे लोगे ताकि आपको पता चले कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है. तो हम इंडस्ट्री में से प्रोफेशनल इंटरव्यूअर आते हैं आपको प्लेसमेंट के लिए. तो वो लोग स्पेशली आपको हमको ट्रेनिंग दिया जाता है. इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखी जाएगी. और इनिशियल इसमें आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, बट आपको आगे चल के आपका नॉलेज बढ़ाते जाना है जहां भी आप काम करो. मल्टीटास्किंग.
Thank you so much, ma'am, for कोई और answering the क्वेश्चन मैं question. मिस कर गई? Ma'am, am I audible? Thank you. Ma'am, am I audible? Ma'am, am I audible? Yeah, now you are audible. Thank you so much, ma'am, for I answering think the in questions. between there is a issue happening. So, Yeah, there's but now network you are issue, ma'am, audible. here. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for answering the questions of each and every one. Yeah. It's been a great pleasure for all of us to have you here with us. You are a true inspiration to all of us. Your words are magical words for each one of us. Thank you so much, ma'am, for motivating each one of us and taking out time from your busy and hectic schedule for us. We are pleased to have your valuable participation and contribution in this outstanding conference, ma'am. Thank you, ma'am. Now, I request Mr. Asif Khan, sir, Assistant Professor, for vote of thanks. Sir, please. Hello. Am I audible? Am I audible? Hello. Thank you, Pranam. Good afternoon, all. I, Asif Khan, feeling a great honor to get this opportunity to propose a vote of thanks on this precious occasion. First of all, I would like to thank Indian Pharmacy Graduate Association Chhattisgarh branch for collaborating with LCIT School of Pharmacy, Bilaspur. And I would like to thank Chief Guest of today's program, Dr. Atul K. Nasa, President Indian Pharmacy Graduate Association, Central Zone, for giving us his valuable time from his busy schedule and share his valuable thought for the participants. He shared during pandemic what are the challenges and Atmanirbhar Bharat, how it was a strong API, so lots of opportunity will form, and pharmacy profession is the best profession. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to thank guest of honor Dr. Dipen Singh sir, Vice President Indian Pharmacy Graduate Association, Central Zone, for sharing his wonderful experience, and he is also inspiration for many and remarkable individuals. Thank you, sir. Thank you so much. And my sincere thanks to special invitee Dr. Sri Lakshmi Darmulla ma'am, Joint Secretary, South Indian Pharmacy Graduate Association, Central Zone, share her experience. Thank you, ma'am. Thank you so much. And our special guest and keynote speaker, Ms. Bhagirshi Bhargave, ma'am, Assistant Vice President, Stride Pharma Science Limited, Bangalore, for sharing her current industrial knowledge and experience and industrial scope with us and motivating all the participants. uh, he share her experience about how to study in higher education, how it will help for the students. And pharmacy profession it is not an easy profession. It responsible profession. We will save many lives for the manufacturing medicines. And the pharmacy profession is very broad profession. uh, their scope is like QC, QA, academic, and industrials, and it is depend upon our interest.
और हम ये भी कह सकते हैं कि देश की सेवा हम चीपेस्ट मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज share with us. And our co-convener Dr. Manju Rawat Singh ma'am, President Indian Pharmacy Graduate Association Chhattisgarh branch, for her motivation, inspiration and association with us for conducting this webinar. Thank you ma'am, thank you so much for your support. And our co-convener, our beloved principal madam, Dr. Shruti Rathore ma'am, Joint Secretary, Indian Pharmacy Graduate Association, Chhattisgarh branch, for her constant guidance and radiant source of energy. Thank you, ma'am. Thank you so much. I am very thankful for all the participants and the faculty members and non-teaching staff, and the most important and our energetic students. I feel very proud and thankful for making this event very successful one. Thank you all. Thank you so much. Hello. My special thanks to भाग्यश्री मैम. शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है मैम, इतना अच्छा आपका लेक्चर रहा एक्चुअली. बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग. आपने सारी चीज़ें बताई पूरे फार्मेसी के अलग अलग डिसिप्लिन्स के बारे में, और हर बच्चे को किस तरीके से चूज़ करना चाहिए है अपना जो भी सब्जेक्ट है चॉइस का, इसमें से फार्मेसी में से भी, और साथ ही सारे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स. और सबसे अच्छी बात मैम जो आपने बताई इथिक्स की जो है, कि इथिक्स पे रहिए और चैन की नींद सोइए. तो थैंक यू वेरी मच मैम. मुझे पता है आप हमेशा, अभी पिछले वीक भी आप फ्लाइट में थे, अभी भी आप कहीं ना कहीं जाने का आपका था ही शेड्यूल, उसके बाद भी आपने मुझे समय दिया. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपको, और LCIT स्कूल ऑफ फार्मेसी की तरफ से भी, और हमारे इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से भी मैम बहुत सारा धन्यवाद मैम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप यू विल बी इन टच विथ अस. एंड मेरे स्टूडेंट्स को आप जरूर प्रमोट भी करेंगी, और आगे कभी अगर आपने कराया हमारे यहाँ पर कैंपस तो उन्हें सेलेक्ट भी करेंगे. श्योर श्योर. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर उनको गाइड करना है, जैसे एक टॉपिक इंडस्ट्री के है, तो दैट लेक्चर आल्सो आई कैन गिव. ये तो जनरल इंस्पिरेशन था, बट जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, या फिर ऑडिट्स, कंप्लायंस, रेगुलेटरी, वो भी एक सब्जेक्ट लेके मैं आपके इंडस्ट्री के इसमें सिखा सकती हूँ. कोई प्रॉब्लम. Sure, ma'am. I'll be glad to do We it. will conduct Thank some you. more lectures, ma'am. We will plan Sure. for that also. Sure. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Definitely.